This session of personal development is brought to you by TBL Education. In previous video, we learned about self-esteem, and in this video, we will learn about some phases of low self-esteem and the consequences of low self-esteem. So, there are three phases of low self-esteem. The first is the imposter, the rebel, and the loser. Now, what is imposter? Imposter क्या होता है? Imposter is a person who pretends to be somebody else in order to trick other people. ऐसे इंसान जो कुछ और बनने की कोशिश करते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए. जस्ट लाइक वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और सक्सेसफुल दिखाते हैं खुद को, जबकि वो नहीं होते हैं. उनके अंदर बहुत ज़्यादा फेलियर का जो डर है वो होता है, बहुत ज़्यादा होता है. दे आर रियली टेरिफाइड ऑफ फेलियर and they live with the constant fear that she or he will be found out. ठीक है, वो दिखाते तो हैं that they are happy and successful and satisfied with their work, but वो जो भी काम करते हैं उससे पहले उनको यही डर होता है कि what if I'll get failure in that. Okay, so needs continuous successes to maintain the mask of positive self-esteem, which may lead to problems with perfectionism, procrastination, competition, and burnout. Next is the rebel. Now, what is rebel? The rebel is a person who refuses to obey people in authority or to accept rules. ऐसे इंसान होते हैं जो बस खुद का गुस्सा, उनका जो गुस्सा होता है उसके सामने बस उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है. एंड ऑल्सो दे ट्राई टू शो कि अगर कोई उन्हें जज कर रहा है और कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कंडेम कर रहा है, तो वो चीज़ उन्हें हर्ट नहीं कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है. एंड व्हेन यू ट्राई टू शो दैट यू आर नॉट बीइंग हर्ट ऑफ समथिंग, it leads to problems like blaming others excessively, breaking rules or laws, or fighting authority, procrastination, competition, and burnout. जब आप ऐसे हो कि हाँ I don't have any problem, I don't have any grudges, even though you are judging me or criticizing me, तो होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं हर बात के लिए, एंड दे स्टार्ट ब्रेकिंग रूल्स एंड लॉज, और वो अपनी अथॉरिटी के लिए और कंपटीशन के लिए लड़ते हैं. ओके, नेक्स्ट लूजर. ये लूजर वर्ड हम सबको अच्छे से पता है व्हाट इज अ लूजर एंड हाउ आर द लूजर्स एंड हाउ डू दे बिहेव. सो they act helpless and unable to cope with the world and waits for someone to come to their rescue. Okay, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस दिखाते हैं खुद को, दैट येस आई कांट डू एनीथिंग, आई एम नॉट इनफ फॉर माई सेल्फ एंड आई नीड समवन फॉर माई सेल्फ टू हेल्प मी आउट इन माई लाइफ, टू हेल्प coping up with the things. Okay, and also uses self-pity or indifference as a shield against fear of taking responsibility for changing his or her life. वो खुद के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में डरते हैं. दे आर लाइक कि मुझे किसी का गाइडेंस चाहिए, समवन नीड्स टू टेल मी दैट व्हाट शुड आई डू विद माई लाइफ, व्हाट शुड आई डू विद माई करियर. तो वो उनका माइंडसेट यही होता है दैट आई एम अ लूजर, मुझे कुछ भी नहीं आता है, आई कांट डू एनीथिंग, सो आई एम नॉट गुड फॉर माई सेल्फ, आई कांट थिंक गुड फॉर माई सेल्फ. ओके, अगर ये सब चीज़ें होती है तो इट कैन लेड टू सच प्रॉब्लम्स एज लैकिंग assertiveness skills, underachievement, and excessive reliance on others in relationship. Now, what are the consequences of low self-esteem? So, low self-esteem can have devastating consequences. What are they? The first one is it can create anxiety, stress, loneliness, and increased likelihood for depression. अगर आपका self-esteem बहुत ज़्यादा low है तो एंग्जाइटी होगी आपको, यू विल स्ट्रेस आउट ओवर लिटिल थिंग्स एंड आपको लोनली फील होगा, एंड ऑल्सो देर आर मेनी चांसेस टू गेट इन टू डिप्रेशन. नेक्स्ट इज इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स. जब आपको पता ही नहीं है दैट सेल्फ एस्टीम क्या होती है, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, हाउ विल यू टैकल अदर फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स, सो इट कैन कॉज problems in that also. It can seriously impair academic and job performance. Obvious सी बात है कि अगर आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो है, यू विल डिग्रेड योर सेल्फ, आपको खुद की वैल्यू नहीं है, यू थिंक योर सेल्फ अनवर्दी, तो आपका अकेडमिक रिजल्ट एंड जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा, वो भी डिग्रेड होगा ही. Then it can lead to underachievement and increased vulnerability to drug and alcohol abuse.
अगर आप एंजाइटी में हो, आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, आप टेंस्ड हो, तो यू विल गो फॉर ड्रग्स एंड अल्कोहल, लाइक यू कैन गो फॉर इट, यू विल नॉट। कुछ लोग होते हैं जो उसको अपना एक वे ऑफ लिविंग समझ लेते हैं, तो अगर आपका लो सेल्फ एस्टीम है तो यू कैन गो फॉर इट, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज रियली वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ एंड लाइफ। Okay, so worst of all, these negative consequences themselves reinforce the negative self image and can take a person into a downward spiral of lower and lower self esteem, and also increasingly non productive or even actively self destructive behavior. So, that was all for today. We'll continue to next.